हेलो एवरीवन। तो आज मैं ऑफलाइन की सेंटर पे हूँ, मेहरौली सेंटर पे। और जिन लोगों को भी आइडिया नहीं है कि हमारा दिल्ली में जो सेंटर ओपन हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए कि किस टाइप का है। और यहाँ पे आप क्लासेस वगैरह आके जब देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। एक ऑफलाइन का जो एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो आपको उस तरीके से होगा। हेलो डियर लर्नर्स, आई एम JS गिल। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अनअकैडमी सेंटर पे हूँ। अनअकैडमी ने अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप सेंटर पे आइए। जितने भी टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के पास हैं वो अपने क्लासेस लेने वाले हैं। गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सोच रहे हो तो आप अनअकैडमी सेंटर को जरूर विजिट करें। So hello everyone, you must aware of that Unacademy started the offline classes in Delhi, right? You must aware of this. I want to say one important thing to you. If you have to visit Unacademy office, Unacademy classrooms one time, they are really beautiful. So all people are praising a lot. So you have to come and you have to experience it. Hello, my name is Avinash Mishra. I am from electronics background and I am passed out in 2022 and preparing here for GATE and ESE for 2024. I choose the Unacademy Offline Center because the main thing is that the educators here, the best educators which we want here, and the main thing is that here the man-to-man interaction between the teacher and the students, the doubt clearing sessions is on day by day. Absolutely, I will suggest to my friends for this center, and I will absolutely say to them that please come here and just have the interaction with the teachers and the coordinators. Hi, I am Lavish. I am from CSIT branch. I chose Unacademy Offline Center because their teachers are very great and I got they are very understanding. And the plus point of Unacademy is that if I am unable to understand some topic, I can revise it with their recorded sessions. My experience so far has been very much great. I got everything clear. I had some doubt and the teacher cleared it as soon as I reached the teacher, and it was very great. Unacademy. Let's crack it.